Assalamu alaikum, dear listeners. Hope you all are fine. I, Mahpara of Nidafield School, is here to discuss one of the chapter of class 9th computers, that is computer software. Before discussing about the computer software, I will give you a brief definition of computer hardware. As you already know that computer hardware is the physical and tangible component of the computer. That means it's that component of the computer which you can touch. Like you can touch mouse, you can touch monitor, you can touch keyboard, they all are the computer hardware. Then what is software? Software is the intangible and logical component of the computer जिसको आप touch नहीं कर सकते हैं. तो software होता क्या है? Let us discuss in detail about the software. Before that, you should know what is a program. A program is a logical set of instructions given to the computer. ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. नाउ सॉफ्टवेयर is a set of instructions or program that perform some specific task on computer. Software instructs the computer about how to do and what to do. These are the instructions which tell the hardware what work has to be done. ये वो इंस्ट्रक्शंस है, सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस है, वो प्रोग्राम्स है जिनके थ्रू हार्डवेयर काम करता है. हार्डवेयर खुद से कोई काम नहीं करता है जब तक ना इसको सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस दे कि उसको क्या काम करना है, उसको कहाँ काम करना है. हार्डवेयर alone is not capable of performing any task unless specific instructions are given to the hardware to complete that specific task. ये specific task कंप्यूटर को कौन देता है, ये स्पेसिफिक टास्क हार्डवेयर को कौन देता है, ये यही सॉफ्टवेयर देता है. यही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बोलता है कि आपको कहाँ पे कौन सा काम करना है. विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खुद से कोई काम नहीं कर सकता है. दे बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. विदाउट सॉफ्टवेयर इज लाइक ए कार विदाउट ए ड्राइवर. जैसे एक कार ड्राइवर के बगैर कुछ नहीं होता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ नहीं होता है. दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बोथ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है. नाउ द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वी विल डिस्कस सिस्टम सॉफ्टवेयर हियर today's lecture and application software in next lecture. So system software. System software. It is a software or the collection of programs that controls the computer's internal operations. It controls and manages the hardware parts of the computer. ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंट्रोल करता है, ये मैनेज करता है हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. जो भी हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है ये उनको मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है. इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर. से दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए भी प्लेटफॉर्म है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है एंड इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर. ये एक इंटरफेस होता है. एक यूज़र कंप्यूटर के साथ कैसे बात करता है, एक यूज़र को कंप्यूटर के साथ बात करना है एंड इट एक्ट्स एज ए इंटरफेस. इसी के थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू एक यूज़र कंप्यूटर के साथ बात कर सकता है. एंड व्हाई दिस इंटरफेस इज रिक्वायर्ड? इट इज़ बिकॉज दिस इंटरफेस इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट कन्वर्ट्स ऑल आवर इंस्ट्रक्शन. जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं ये इसको कन्वर्ट करता है इंटू मशीन रीडेबल फॉर्म में. बिकॉज यू ऑल नो दैट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स द मशीन लैंग्वेज. लेकिन हम जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं जो रिजेंबल करती है इंग्लिश लैंग्वेज से. तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक मशीन रीडेबल फॉर्म में हमें सॉफ्टवेयर ज़रूरत होता है. और भी सॉफ्टवेयर जो हो और भी बहुत सारे कामों के लिए हमें ये ज़रूरत पड़ता है. सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, device driver and utility software. We will discuss these types of softwares now. The first is operating system. So operating system is one of the important type of system software. Sometimes operating system alone is termed as system software because it's very important for computer.
It's a software which acts as an interface between the user and the hardware. It controls and manages the entire system. हमारा जो पूरा कंप्यूटर है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर पे कोई काम कर ही नहीं सकते हो. जब आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो कंप्यूटर पे. It helps in memory management, it helps in file management, it controls the peripheral devices. By peripheral devices we mean all the input and output devices. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को, जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, कोई भी डेटा आपको स्टोर करना है, उसको कौन देख लेता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेता है. इट्स CPU जो होता है वो प्रोसेसिंग करता है, इट्स ट्रू, बट उसको कौन बोलता है ये सब करने के लिए? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलता है ये सब करने के लिए. और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर functioning of all the different hardware parts. Operating system is required so that these hardware parts can function properly and follow our instructions. Operating system is always the first software. As already I told you, operating system is the first software that gets loaded on your computer when you switch on the computer. Operating system जो होता है, it acts as a supervisor. It acts as a supervisor for all your applications, games and other types of software. We have various operating systems. मोबाइल फोन्स का होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. लाइक हमारे फ़ोन्स में होता है एंड्रॉयड होता है, या कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैकिंटोश है, एप्पल मैक जिसको हम बोलते हैं. बहुत सारे विंडोज़ के लाइक वी हैव विंडोज़ 8, वी हैव विंडोज़ 10, विंडोज़ XP, बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. The next type of system software is language processor. It is a system software which translates a high-level language program into low-level language, that is machine language. As you already know that computer only understands the machine language. That's the language of zeros and ones and और बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस बोलते हैं, या हम जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं. Writing programs in machine language is very difficult. Humans can work better and faster with meaningful words and figures, so they prefer writing programs in language using regular English words. आपको पता है कि मशीन लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे हमारे लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. मशीन लैंग्वेज जीरोज एंड वंस में अगर हम अपना प्रोग्राम हम नहीं लिख पाएंगे. सो हम किस में अपना प्रोग्राम लिखते हैं? हम किसी ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं, या हम इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रिजेंबल करते हैं उस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं, और उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. वो लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज नहीं करता है. इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट दैट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज वी नीड सम प्रोसेसर्स, वी नीड सम ट्रांसलेटर्स. लैंग्वेज प्रोसेसर यही काम करता है, ये ट्रांसलेट करता है, ये प्रोसेस करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, जो इंग्लिश रिजम्बलिंग लैंग्वेज है उसको एक मशीन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स. लैंग्वेज प्रोसेसर जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं: असेंबलर, interpreter and compiler. We will discuss about these later in this chapter. Now we will discuss the next 2 types of system software in our next lecture. Thank you. Have a good day.